This is so emotional, Ranbir. This is so emotional, seriously. And now, ladies and gentlemen, please have a seat. Ladies and gentlemen, the man who's been there in the industry. He's been there, done that, and he's doing it again. And how? Give it up for Lord Bobby Deol. Welcome, Bobby sir. और अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूँ, she is not just gorgeous, she is amazing. And हमने उनकी range अभी इस बड़े पर्दे पे देख ली. Give it up for Rashmika Mandanna. And the man, ladies and gentlemen, the visionary, जिनकी वजह से ये सब हो पाया इस बड़े पर्दे पर. Give it up for the maverick director, Sandeep Reddy Vanga. And now it's an honor, it's a privilege to invite on stage the man who's actually the strongest pillar of Indian cinema. Ladies and gentlemen, Mr. Bhushan Kumar. The producer sahab. Along with him, would like to invite on stage Mr. Ranbir Reddy Vanga, ladies and gentlemen, the producer of this movie. And here's presenting the most amazing team of the movie, Animal. Please, आप लोग बैठिए. Please, take your seats. फोटो करने का ठीक है. Please be seated, sir. एंड आई रिमेंबर जब उन्होंने नरेशन ख़त्म किया, मैं कुछ बोल नहीं पाया. मैं सीधा अपने बाथरूम में गया और मैं अपने आप को शीशे में देख रहा था, थिंकिंग कि यार ये क्या सुना दिया इसने, मैं कि कर पाऊंगा कि नहीं. यू नो, इट वाज एक्चुअली आई डोंट यूज द वर्ड डार्क बिकॉज डार्क हैज अ वेरी नेगेटिव मीनिंग टू इट, बट ये ऐसा एक किरदार, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दुनिया था जो मैंने पहले कभी सुना नहीं था. यू नो, मैं संदीप का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. आई लव्ड अर्जुन रेड्डी, आई लव्ड कबीर सिंह ऑल्सो. जब मैंने अर्जुन रेड्डी देखी, ये कबीर सिंह की अनाउंसमेंट से पहले जब मैंने देखी थी, मुझे लगा कि इससे बेटर लव स्टोरी कोई बन नहीं सकती. और फिर संदीप ने फिर से वही लव स्टोरी कबीर सिंह में बनाई और मैंने कहा कि मैं चैलेंज देता हूँ, ये हिट हो ही नहीं सकती. क्योंकि जो अर्जुन रेड्डी ने जो कमाल किया था, जो परफॉर्मेंसेस थे, जो म्यूजिक था, वो रिक्रिएट हो नहीं पाएगा. बट ही डिड इट अगेन. And when he offered me this film, ये मेरा सौभाग्य था. I was grateful कि filmmaker like him. बस क्यों रहे हो? ज़्यादा हो गया. I think laughing on the word सौभाग्य, but yeah, I was so grateful that I was given this opportunity. ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे किरदार में नहीं देखते. But listen, मैं बोलते जाऊँ. I just want to say that thank you so much. We really. हम सबको बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा रिस्पांस दिया. इट रियली एनकरेजेस अस. और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि जो आपने ये देखा है, ये सिर्फ 5% है. फिल्म में इससे बहुत 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 ज़्यादा है. सो प्लीज डू कम टू द सिनेमाज ऑन 1 December. Ranbir Kapoor, ladies and gentlemen. Bobby sir, this one's for you. Of course, we know कि कितनी मेहनत जाती है when you do ऐसा एक रोल. लेकिन आंखों से बड़ा सब बोल रहे हैं. You know, be it the teaser or here, there is so much that your eyes are saying. आपके दिमाग में क्या चल रहा था? How emotional was this journey for you? कितना सारे लोग. मैं सबसे पहले संदीप को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जिन दिनों में जो मेरे करियर की सिचुएशन थी, मुझे ऐसे रोल कभी मिलना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कमाल का कैरेक्टर कभी मुझे मिल सकता है. तो एक दिन मुझे संदीप का मैसेज आया, सेइंग संदीप रेड्डी वंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू. तो मैंने बोला यार ये सचमुच में संदीप ही है, कोई और है, मस्ती तो नहीं कर रहा कोई. तो मैंने पता किया, बोलते नहीं तो संदीप ही है. तो मैंने बोला यार फ़ोन लगाओ फटाफट. फ़ोन लगाया एंड मैंने बोला चलो मिलते हैं. एंड वी मेट एंड मुझे ये आकर एक फ़ोटोग्राफ दिखाते मेरी. इनके पास एक फ़ोटोग्राफ थी जब मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा था, पर मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था. तो वहाँ मैं एक फ़ोटो खींची गई थी जहाँ मैं एक्चुअली दूर कहीं देख रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे ये फ़ोटोग्राफ दिखाई और कहा कि मैं आपको इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि आपकी जो फ़ोटोग्राफ है, इसमें जो आपका एक्सप्रेशन है वो मुझे चाहिए. एंड आई से चलो बेकारी के दिन काम आ गए फोटोग्राफ. तो वैसे मुझे
anyway, film very so I love you, Sandeep, for really, really giving me this opportunity. And what do I say? I just have to say that working with this amazing cast, and I mean, I'm a huge fan of this man out here. Yes. He is. I must say, मैंने इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ काम किया है और सारे स्टार सुपरस्टार लोग हैं, लेकिन इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है हमारी इंडस्ट्री में, और वो उनमें से एक है। और जब मैं इससे काम कर रहा था तो मैं बस इसकी आंखों में देख के खो जाता था। He was so mesmerizing as an actor. So I'm really grateful to be part of Animal, and हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये सब bare body करनी पड़ी हमको। पर I'm glad आप लोगों को इतना अच्छा लगा, आपका रिस्पॉन्स मैं सुन रहा था और फील कर रहा था इस वक्त जब चल रहा था प्रोमो। So love you all for being here today, and please thank you so much. Thank you so much sir for sharing that. Of course आंखों का खेल है, जैसा मैं यहाँ बता रहा था, और उससे याद आया आंखों में बहुत कुछ हो रहा है रश्मिका, you know you and of course so lovely, thank you so much. तो रश्मिका, you know, as I said, आंखों में बहुत कुछ हो रहा है. Of course, I have a serious question for you, लेकिन उससे पहले one good quality of this man जो लगता है हर किसी को सीख लेनी चाहिए आरके से. सीख लेनी चाहिए. I think आरके ना. Hi everyone, first of all. Yes. कैसे हैं आप? सब ठीक? All good? 8 and all, no? Yeah, okay. मैं ठीक हूँ. Thank you, Astrid. कर लो पर्सनल 1-on-1. हम तो ऐसे ही खड़े हैं. जी. Sorry for the answer for your question. I feel like one thing is he makes it very easy for his co-actors rather than I think himself on set, because the first question I think he came and asked me was do you want to rehearse before the scene or do you just like rolling directly? And that was a question that I was never asked before, because generally till I started working with Ranbir, I used to just be like, okay sir, we're ready, let's roll. And suddenly here's this man who's come and asked, let's do one-on-one rehearsal and then we'll start rolling. And I realized the performance when you like rehearse with your co-actor comes so naturally and so beautifully. The chemistry builds, the rapport builds, the conversations get better. So I think that is one thing. Like, I'm speaking very professionally, so it's one thing that I've learned from Ranbir sir. Right. There's you know this beautiful father-son relationship, but उसके अलावा वो दुश्मनी भी दिख रही है, violence भी दिख रहा है जैसा सर ने वादा किया था. But वो scene जो हमने अभी यहाँ पे देखा, वो कितना हिला के गया. Would you say that this is the best of Rashmika जो हमने अभी तक देखा है? Yes. है? Yeah. She said it, ladies and gentlemen. Breaking news. Sir, I really have to give it to Sandeep sir. I really have to give it to Ranbir, because I don't think I have seen myself doing a character like this. And Ranbir is such an intense performer. So if you have to share a screen with him, so matlab you have to be good enough. And I didn't think I was good enough, but I think Sandeep got it out of me. So all credits goes to this man here and this man here. Of course, we love you, Rashmika. See, सबकी तरफ से मैं कह दे रहा हूँ चांस पे डांस. थैंक यू सो मच. तू सब बोरिंग सवाल कर रहा है, तो वो असली कंट्रोवर्शियल आंसर्स इधर से आ रहे हैं. मैं वही आ रहा हूँ. So Sandeep sir, thank you so much. Rashmika, Sandeep sir, this one's for you. जैसा आरके ने बोला, अब जरा कुछ मसाला लाते हैं. आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमारी मुलाकात हुई थी, आपकी पहली हिंदी मूवी थी, है ना, कबीर सिंह विद टी सीरीज, तब आपने कहा था अभी तुम लोगों ने देखा नहीं है वायलेंस. उसके बाद भी हमारी ये बातचीत हुई थी. तो अब ये उसका बदला निकाला गया है, लाइक यू आर लाइक ऑल आउट ओवर देयर, और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग अगेन? नहीं, वो अपना प्रेस मीट नहीं था, वो दूसरा प्रेस मीट था. सर, हमारी भी बात हुई थी सर. एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, एंड थैंक यू सो मच. It's more than the physical violence, it's a mental violence. Right. More internalized. Right. Last time, sir,
ऐसा कुछ मारधाड़ नहीं हो रही थी, but still there were so many fireworks. यहाँ तो proper होने वाला है. So talk to us about that and your journey with Animal, because ये इतने दिन से चल रहा है. People have been talking about this. The actors, उनको हर जगह बस यही पूछा जाता है. So you tell us about your journey and how was it for you? Like Animal आपके लिए क्या थी? It's more than 3 years. I'm into this story, into the screenplay, into the characters, and it's a long journey. We had great time. We had great actors. Working with Ranbir Kapoor is for a second-time filmmaker. It's actually it's a big thing, a great opportunity. नहीं इनको ऐसा लगता है, but बहुत बड़ी बात है, सबको पता है, right? For a second-time filmmaker to get a chance with Ranbir, and I was very excited when I got to know that we'll be working. And once I started narrating the story, and the rest fell in place. So yeah, उसके बाद हाँ जर्नी, लंबा जर्नी. और कुछ पूछो मैं बोलता हूँ. सर कुछ बताओ मसाला सर सबसे ज्यादा आपको असली मसाला वहाँ से मिलेगा. वहाँ अभी आते हैं. We'll come to that मसाला. मुझे थोड़ा हद में रहना पड़ता है. Bhushan sir, this one's for you. One of the strongest pillars of Indian cinema, as I said, of course, that goes really well with, of course, यहाँ sitting with this team, the kind of response that you've got, और इतना सारा जो buzz already create हो गया है Animal को लेके, what do you have to say, sir? Thank you very much everyone for the great response. Yesterday we got a great response from the Bombay press, and same thing we are getting here, and thank you very very much for that. As Sandeep rightly said, we have given our 3 years, means all of us hard work, especially means Ranbir. We have seen him in so many characters in this. Everybody has worked great, Bobby sir and Rashmika and the entire cast, and obviously Anil sir, means he has done a great job in the film. So me as a producer, very very happy with the film. I've seen the film I think thrice, and it's mind blowing. Means I can't thank Sandeep to make this film with us. And we have worked in Kabir Singh before, had a we've got great love from you on that film. So we are expecting the same love on this film on 1st of December. Thank you so much, sir. Thank you so much. Pranay sir, quickly, if you have to, add something to that as a producer of Animal, and of course the kind of response that we've just got. Thank you, Delhi. We got amazing response from Bombay yesterday, and I see that in Delhi. So we are looking forward for the movie. We know the movie is going to hit, but अभी कितना बड़ा hit होगा, time will decide. And I'm very happy working with RK. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. And as Ranbir said, अब आएंगे वो सवाल, तो अंदर के Animal को चगाइए. And over to you. चलिए. कहाँ से? Where are we taking the first question from? संदीप सर, आप अपना कुर्सी यहाँ ले आओ. Yes. हम लोग को माइक की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही जोर से बोल दो. एनिमल की जरूरत क्या पड़ी? कौन है एनिमल इसमें? This is Vartika from Live Hindustan, and I love the trailer. मतलब ट्रेलर देखने के बाद मेरे भी आंखों में आंसू आ गए. And मेरा सवाल रणबीर और बॉबी जी से है. हम लोगों को इतना एक्साइटमेंट है आप दोनों को देखने का. आप दोनों को साथ करने में, काम करने में कितना मजा आया और कितनी एक्साइटमेंट थी? When Sandeep ने मुझे कहा कि for the antagonist this part he is going to cast Bobby sir, मुझे याद है कि जब बरसात फिल्म रिलीज हो रही थी, और जो भी बॉबी सर ने उस फिल्म के बाद जो भी किया, आई रिमेंबर व्हाटएवर ही यूज्ड टू डू ऑन स्क्रीन. अगर जो उनके वो ब्लू कलर के जो चश्मे थे, द वे ही यूज्ड टू वेयर हिज वाइट शर्ट एंड जीन्स, उनके जो यूज्ड टू वेयर अ पर्टिकुलर डीजल ब्रांड, उनके जीन्स पहनते थे. मैं हमेशा जहाँ भी जाता था मैं लिखता था बॉबी सर ने ये पहना, तो वो सेम चीज़ शॉपिंग करता था. सो आई हैव रियली ग्रोन अप वाचिंग हिम. वी मेट सोशली, बट जब इनके साथ काम करने का मौका मिला, आई थिंक वी बोथ आर वेरी सिमिलर पीपल. We both are, if I can say, very Punjabis. तो एक instant connection हुआ. I remember कि हम लंदन के -3, -4 degrees पे shirtly shoot कर रहे थे for around 12 to 15 days. But there was so much warmth between us कि हमें ठंड ही नहीं लगी. So I think ये ऐसा रिश्ता है that I will really cherish for all my life. So thank you Sandeep sir for bringing us together.
thank you, Bobby sir, for being part of our movie. love you, Ranbir. हेलो दिस इज सीमा धवन बॉबी सर को भी बोलने दो। नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मतलब रणबीर मुझसे बहुत छोटा है, तो जब मैं कभी बाहर जाता था सर इतना भी छोटा नहीं है। लेकिन मुझे आज भी याद है, जब भी मैं कहीं गया हूँ कोई पार्टी पर या कहीं भी, तो मैं रणबीर से मिलता था, हमेशा बहुत प्यार से मिलता था, बहुत रिस्पेक्ट देता था। लेकिन मैं जब इसको हमेशा नोटिस करता रहता था कि इसमें जो स्टाइल है, इसकी पर्सनैलिटी है, और जब ये डांस फ्लोर पर जाता था, there was nobody better than him on the dance floor. And I used to just think that one day when he comes on screen, he's going to really kill it. He's going to be the best. And I guess here I am working with Ranbir, my favorite actor, and it was wonderful working with him on the first day. We shot together in London, and it was just amazing. I mean, I'm telling you, I felt so overwhelmed working with him. It was just some of the most beautiful moments of my life, working with Sandeep, Pranay, Ranbir, and the whole unit. It was just the day when my shooting got over, I was like, I got up in the morning feeling sad. I said, अरे shooting खत्म, अब मैं इनसे इतने हर दिन ऐसे नहीं मिल पाऊंगा, पर हमने at least spend किए वो 12-15 दिन साथ में, so I'm always gonna cherish those moments with him. कि आपने संदीप सर के साथ ये मूवी की है, बहुत जबरदस्त मूवी रहने वाली है। ट्रेलर देखकर तो गूज़बम्प हो गया था। कमाल की फिल्म है कि यहाँ पे जो ये फिल्म का आप निकाल के लाए ना, इसके अंदर जो मार धाड़ है बहुत जबरदस्त है और कहीं ना कहीं इमोशन को हिट करती है। तो संदीप सर के साथ जो आपने फिल्म की है, तो आपको क्या नया एक्सपीरियंस मिला? आई थिंक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से इतने ओरिजिनल राइटर है, इतने ओरिजिनल डायरेक्टर है, इनका कोई भी मोमेंट, कोई भी सीन ऐसा आपने कभी लाइफ में कभी देखा नहीं है, कभी महसूस नहीं किया है। हम कितना बात करते थे सेट पे कि ये सब संदीप के पर्सनल लाइफ में सब हुआ होगा, बिकॉज ये कहाँ से लाते हैं ये सब आइडियाज। बट इट्स रियली बीन इट्स बीन टू इंस्पायरिंग फॉर आर्टिस्ट। Waiting to watch it, the trailer finally today we see it. Ranbir, you believe you got of course looks like Bobby will do it Santu in the past. Plus first scene में भी Santu की याद आ रही थी. But do you believe this is till date perhaps your darkest, most intense character that you played? And for you, how was the process, switching off sets while playing it? I think Uday, darkness is, like I mentioned earlier, darkness is a very misused term, so I don't want to use the word dark. But yes, it's the most complex character I've ever played. People usually see me in a particular way as the boy next door, chocolate boy, romantic hero. I don't know what he saw in me that he offered me this part. But इसने इतने रंग दिए इस कैरेक्टर में, मुझे नहीं, हर कैरेक्टर को। I think ऐसा राइटर है कि he writes for every character and he gives them a character. He gives them a plethora of emotions, of complexities, and that is very exciting to portray. The switching off, switching on part was very important to me, because when I was starting this film, I became a father. Raha was born. So I was going on set and doing all these things and then going home and seeing my daughter. So it was a bit surreal. But when you're inspired, आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। ये फिल्म हमने करीबन 100 दिन में खत्म कर दी, and I think बहुत जल्दी खत्म हुई है, because पता नहीं लगा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ फिल्म। And that only happens because you're working with inspired people. Right? Sandeep is definitely on top of the ladder where inspired people are. हेलो हेलो दिस इज सीमा धवन over here. अच्छा सब लोग सर हेडमास्टर है, ये बोलेंगे। Hello, this is Seema Dhawan over here from Retro Pop Lifestyle Magazine. So my question is welcome to the entire team. My question is for Bhushan sir. How would you describe Animal? And Ranbir, what would you say about your character in it? See, it's a full commercial film with everything. You have music, you have performances, you have drama, you have action, everything what a person need to entertain themselves while watching a film. So it has everything in it. Basically adult rated Kabhi Khushi Kabhi Gum. That's a right one. Ranbir, I asked you one question. What would you say about your character in it? My character, ma'am, it's pretty now. The trailer's out, so you can see what he is. We would like to build some mystery around it. It's just 1 week to release.
But I think if I had to describe this story in a line, it would be about a man who goes to any lengths to protect his family. That's what the core of this film is. We are from 104.8 Asia FM radio channel. So हमारे जब फीमेल लिसनर्स को पता चला आप लोग कोरस में बात करते हैं उसको पता चला कि आप हम आपसे मिल रहे हैं तो उन्होंने गिफ्ट दिया है जो हम आपको देना चाहते हैं if you allow can you come there Yes, of course, but should we finish this and then फिर आ जाओगे? लास्ट में बात करें but on the trailer response we would like to ask चलो next कि जो भी आपने ट्रेलर का जैसे भी था you've done a lot of movies और आपको इस कैरेक्टर से वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आने के लिए बिकॉज यू जस्ट गॉट मैरिड तो वो ऐसा तो नहीं था कि जो आपका इंटेंस रोल है वो रियल लाइफ का उसको स्विच कैसे करते हैं व्हाट वाज द स्विच I think thankfully मैं एक detached किस्म का इंसान हूँ, so you know I know what work is, I know what personal life is, so I never take my work home. You know, you have to switch off as an actor, you have to have that ability because it's not fair for your loved ones. You know, आप किसी कैरेक्टर में घुसी और घर आके मैं इस इंसान के जैसे बिहेव करा था, मेरी बीवी मुझे मारती फिर क्या हो गया तेरे को, you know, so you have to have that, you know, at the end you're all professionals, you know, we have to develop some skills and you have to work with those skills. Hi everyone, I'm Devi. My question is to Sandeep sir. जब कबीर सिंह आई थी तो बहुत सारे सवाल थे स्पेशली फॉर फीमेल कैरेक्टर जैसे रणबीर ने कहा ना मजेदार आंसर तो उसी के वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी लेकिन जब आप एनिमल कर रहे थे स्पेशली रश्मिका के किरदार के लिए क्या आपने इतने सारे डिबेट के बाद सोचा कि नहीं मेरी फीमेल कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट होगी या वो सिर्फ छुई हुई टाइप नहीं होगी कुछ ऐसा चेंज किया या नहीं मैं वैसा ही रहूँगा जैसा हूँ मैं कुछ चेंज नहीं किया बिकॉज कबीर में प्रीति वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या उससे ज़्यादा गीतांजलि इज इम्पोर्टेंट तो कुछ चेंज नहीं हुआ एज इट इज कुछ फर्क नहीं पड़ा Hi everybody. Hi everybody, this is Rashmika from ENT Live. Hi. My question is for Ranbir and Bobby sir. बहुत अच्छा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, फाइट सीन बहुत अच्छा है, बट अनिल कपूर सर ने कितनी हेल्प करी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो जाने। वो हमारे ट्रेनर नहीं थे बट एवरग्रीन स्टार है ना, एवरग्रीन स्टार। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोल दूं कि मैं 1 साल से बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो एंड क्लाइमैक्स फाइट है बॉबी सर के साथ शर्ट निकालनी पड़ेगी, तो मैं और मेरे ट्रेनर लगे हुए हम लंदन पहुंचे, पंप कर रहे, पहला मेरा शर्ट निकला, सडनली जब बॉबी सर आए और उन्होंने शर्ट निकाली, मैं और मेरे ट्रेनर लग गए भाई हमारी बॉडी कोई नहीं देखेगा। मेरे को इतनी टेंशन थी, मैंने इसको इतनी बड़ी बेयर बॉडी देखा, मैंने बोला यार रणवीर की बॉडी तो कमाल की है, कैसे यहाँ तक पहुँचूंगा, कहाँ पहुँचूंगा, लेकिन पर मेहनत तो करनी पड़ी हम लोग, इतने पुशअप 5-5 बजे उठ के जिम खुलवाया, वो होटल में जिम नहीं खोल रहे थे हमारे लिए, हमें कितनी चीजें करनी पड़ी हमें। जहाँ अनिल सर का सवाल है, आई थिंक ही सिंस 40 years have really pushed the क्या बोलते हैं, push the bar where fitness is concerned. You know, if you see him today, he doesn't look like a year above 40 years old or 35 years old. So yeah, I mean, he is really a icon where fitness is concerned, and we all take inspiration from him. First of all, congratulations on the lovely trailer, and you all are looking beautiful today. My name is Radham Bora, and I'm a rapper. And Ranbir sir, I'm a huge fan, and I wrote 2 lines for you if I could just. Please. एक आया कलाकार जो न जलता किसी आग से, The light to the stars, एक ही झलक और सब कांपते है संजू वाली स्माइल, रॉक स्टार with the mic, he's the king of the pride, RK सभी जानते हैं। Thank you, man. Thank you. Thank you. हेलो, एक सेकंड, कोई टी सीरीज फैमिली बोल रहा है, कौन बोल रहा है? भूषण कुमार फिल्म टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या बोलो? एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं
जी जी आपसे ये पूछना चाहते हैं, मतलब जैसे एक्टर बनना चाहते जी। हैं, आपसे टिप्स लेना चाहते हैं। टिप्स तो मैं बहुत दे सकता हूँ, लेकिन आई थिंक ये अभी 15 साल बाद जो मेरी प्रोफेशनल करियर हुई है, आई थिंक जो अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली है, 3-4 चीज़ें। देखो, मेहनत और टैलेंट तो सब में वो तो बेसिक है, वो तो आप में होना चाहिए, बट आई थिंक उससे ज़्यादा यू मस्ट हैव पेशेंस कि आपका मौका आएगा। कभी कभी ये ऐसी इंडस्ट्री है कि साल बीत जाते हैं और आप वेट कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू अर्न अ लिविंग, बट दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स यू टू बी पेशेंट, सो बी पेशेंट। दूसरी चीज़ होगी सैक्रिफाइस, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ पर्सनल लाइफ। समटाइम्स आपके जो दोस्त अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड सरेंडर जो जिसकी ज़रूरत होती है फॉर दिस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड द थर्ड थिंग आई वुड से इज लक। तो लक तो हमारे हाथ में नहीं होता, तो लक तो आपके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, तो जिस बारे में आप कर सकते हो वो है कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, इफ यू आर अ गुड पर्सन, यू डू गुड डीड्स, बाबा मेक श्योर करें कि आपके बारे में कुछ होता है। We take one last question, ladies. जब खत्म होगा तो मिलें। Hi, Ranbir this side. Hi, hello. Ranbir this side on your left. Hello. Hi, हाँ जी हाँ जी हाँ जी Gopal. हाँ जी। Hello. Hello. Hi, Ranbir this side. Hi. Congratulations to the army in black today. मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि जो बॉन्ड हमें दिख रहा था, जो दिख रहा है ट्रेलर्स में, एक पापा था, एक बेटे का, वो डैड एनिमल के जो पापा है वो मिसिंग है, वो क्यों प्रमोशंस का हिस्सा नहीं हो पा रहे? भूषण सर, अनिल सर का है। अनिल सर, वो एक्चुअली दुबई में है। हमारा जो ट्रेलर लॉन्च था, ये एक्चुअली 21 तारीख होने वाला था, एंड आई थिंक वी गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बट उनकी डेट्स दुबई में थी, बट वी मिस इट क्योंकि वो इतने अहम हिस्से हैं हमारे पिक्चर के, एंड दिस फिल्म वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट अनिल सर, सो वी मिस यू अनिल सर। झकास। We take one last question. रुकिए यहाँ पूछे, हम इधर हैं, 10 मिनट तो रुकते हैं। Okay, so sir, my question is, sir, we all know how famous the kind of violence Sandeep sir shows in his films. Okay, so I want to know personally from you, Ranbir sir, Rashmika ma'am, and Bobby sir, what kind of violence did you perceive from this movie? I think where violence is concerned, it's not really about action. You hit someone and blood comes out, because वो आप 10 सेकंड के बाद आप बोर हो जाओ। I think violence is about the mind, what the human mind thinks, what the human mind is capable of doing. Where society is concerned, what is right, what is wrong, what is good, what is bad. Is Bobby sir the antagonist or I am the antagonist? Who's the right person, who's the wrong person? So I think these are questions that as a society, as an audience, maybe they will start asking after this film. But where violence is concerned, I've always believed it's not about dishum, it's more about what goes on in the mind. Rashmika ma'am, Okay, all I can say is that हम हर इंसान में एक बुरा होता है, अच्छा होता है, और हम अच्छे इंसान तब बनते हैं जब हम अपने बुरे को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन में पड़ जाती है कि वो हमारे अंदर का जो गुस्सा है वो आता है बाहर, सबके साथ होता है। तो ये फिल्म एक कहानी है परिवार की, जहाँ पर ऐसे सिचुएशंस आते हैं, इसलिए आप मतलब देख रहे हैं लोगों में। So this is a part and parcel of life, and it's just trying to explain to the society कि कोई भी अच्छा बुरा ऐसा हम डिसाइड नहीं कर सकते, किसी की रीजनिंग हमें पता नहीं है। तो I guess that's what it's all about. एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल अरे बैठिए यार। So, violence. See, for me, basically, when I watched Arjun Reddy or Kabir Singh, I didn't think it was a violent film, but I thought it was high on intensity. So, even this film like Animal, you see a bit of violence where people are killing each other, hitting each other. But if you see the emotion of the film, it's high on, like, it's high intense emotion that you don't really. I think Sandeep as a director is someone who's unapologetically real, because he's just like, this is my story and So true. no, that's what I think. And I was like, because many a times when we were doing some scene, we were like, oh, but can you shoot it like this? Can you actually do it like this? And he was like, this is how I want my cinema to be. And it is so amazing because nobody else does that in cinema. Everyone sugarcoats everything that they want to say on cinema, and he doesn't do that. So I think that's something I appreciate him for.
and I think he's a really smart director like that. And I think why there's so much conversation and why there's so much, you know, anticipation for the film is only because of that, because we are living people's lives, which is so real to the core, and we have nothing to lie about those characters, you know. So I think that's something I find absolutely amazing. एक बात बोलूं? अरे सुनिए, क्या हुआ? कल मुंबई में जब ये ट्रेलर दिखाया गया, Let him complete, guys. Give me one. Yeah. जब मुंबई में कल ये ट्रेलर दिखाया गया तो सारे लोगों ने कहा ट्रेलर ऑफ द ईयर है, बेस्ट ट्रेलर है, कमाल का ट्रेलर है। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या बात है, देखता हूँ जरा आके। और जब देखा तो बॉस ब्रिलियंट है। और रणबीर आपसे एक सवाल है, मैंने सावरिया से लेकर देखा लवर बॉय की इमेज, रॉकस्टार से देखा, अभी लास्ट दोनों फिल्में ब्रह्मास्त्र देखी। इस किरदार को लेकर आपका क्या, हर किरदार के लिए आर्टिस्ट का एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि हम ऐसे प्ले करेंगे, ऐसा मैनरिज्म होगा, वो इस किरदार के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? आई थिंक मैं हमेशा जब संदीप से मिलता था, मैं हमेशा यही क्वेश्चन पूछता था कि संदीप मुझे एक रेफरेंस दे। मैंने कभी एक यू नो आई नेवर हर्ड एनीथिंग, मुझे ये सब चीज़ें महसूस हुई नहीं है। आई थिंक इवेंचुअली सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मुझे मेरे पापा की याद है। आई थिंक जिस तरीके से वो बात करते थे, ही वाज अ वेरी पैशनेट अग्रेसिव मैन, तो आई ट्राई टू Yes, ma'am. एक सेकंड पूछिए। My question is from Bobby sir. Ranbir की प्रेम कहानी, then Sunny Deol in Gadar 2. Now make Ranbir Deol's debut, and now you in Animal. Can we say 2023 is the year of Deol? Deol. हेलो या आई नो इट्स पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 जनरेशन एक साथ एक ही साल में उनकी फिल्में आई हैं, और फिर चाचे की फिल्म आ रही है अभी, तो बहुत खुशी हुई। पापा ने जो काम किया रॉकी रानी में, उनकी सिवाय और वो रोल कर नहीं पाता, मैजिक किया। गदर ने तो गदर मचा दी, आप सब देखिए डेफिनेटली। So I'm very, I mean, God has been really kind, and it's all the love you guys have given to my family for so many years, and finally, you've given you all something this year, so thank you so much. Hi Ranbir, Ranbir this side. Ranbir. एक सेकंड कुछ चला क्यों रहे हो? Hi Ranbir, Deepika this side again. Just one question, yes, just one question. जस्ट वन क्वेश्चन कि आपने संदीप सर के बारे में बहुत सारी बातें कही, मुझे जानना था कि भूषण कुमार इस समय टी सीरीज के जरिए बहुत सारी ऐसी फिल्में ला रहे हैं जो दर्शकों को पसंद आ रही हैं। व्हेन यू वर्क अ प्रोड्यूसर लाइक हिम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक एक्सपीरियंस विद भूषण सर इज, यू नो, हम एक्चुअली जब मैं भूषण सर के साथ डायरेक्टली काम नहीं किया, एक्चुअली 90% ऑफ हिंदी फिल्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस्ड बाय भूषण जी। तो मैं दूर से पार्टीज में मिलता था, यू नो, यूज्ड टू अक्वायर मोस्ट ऑफ द म्यूजिक ऑफ माय फिल्म्स। आई न्यू हिम, बट थ्रू एनिमल आई गॉट टू नो हिम इवन बेटर, एंड आई थिंक ही इज अ सॉलिड सपोर्ट। जहाँ फिल्म का सवाल है, आई थिंक ही इज समवन हु डजंट इंटरफेयर टू मच कि यार मेरे पैसे तो ये ऐसे करो वैसे करो। आई थिंक ही गेव संदीप द करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम, द करेक्ट अमाउंट ऑफ ट्रस्ट। जब भी उनकी ज़रूरत होती थी, he was always there, you know, he was always there to help us, he was always there to back us. तो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा, एंड आई होप कि हम साथ में बहुत सारी फिल्म्स करें साथ में। भगवान करे कि अगर एनिमल पार्ट 1 चले तो एनिमल पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बने। तो यही Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have. Two more questions, sir. अच्छा, एक करके रखते हैं। आप पूछो। एक सेकंड, आप नेक्स्ट हो, आप पूछो। As you just said कि Animal
पार्ट 2 या पार्ट 3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आजकल जैसे इंडस्ट्री में यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, तो क्या आप एनिमल का यूनिवर्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो इस पर डिपेंड है। वो पूछ रहे कि आप एनिमल जैसे यूनिवर्स है, स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, ऐसा कुछ एनिमल का यूनिवर्स है। जैसे आपकी अगली फिल्म प्रभास सर के साथ है स्पिरिट, वो कॉप पिक्चर है, ये थोड़ी गैंगस्टर है, तो क्या स्पिरिट और एनिमल साथ आ सकते हैं? ऐसे कभी सोचा नहीं, बट इफ इट इज देयर आई लेट यू नो। किसी के पास बॉबी सर के लिए सवाल था यार? आप पूछो। अच्छा देखो, अभी तो ये मिस हो गया, तो उसको सुन नहीं सकते, तो अभी फोटोग्राफ कर ले। हाँ चलिए। That's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Would like to invite on stage someone very important. और जहाँ तक टीम वर्क की बात हो रही है, और इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर शिव चानना साहब from T सीरीज, ladies and gentlemen. शिव सर प्लीज, ये कंप्लीट